Assalamualaikum students. Today in the course of positive psychology we will again learn the forgiveness. We have already understood the concept and definition of forgiveness. Now we will focus on the correlates of forgiving behavior. Disposition to forgive. Researchers noticed the age-related trends in forgiveness, chronological age and reasoning about forgiveness were correlated strongly in children, adolescents and so research evidences have proved the contribution of age in forgiving behavior. So chronological age and the reasoning ability about a situation or a person or about forgiving behavior were found to be related with forgiveness in children, adolescents and adults. So when researchers examined children, adolescents and adults and investigated forgiving behavior in all of them, then they found out their age playing a significant role in determining their forgiving behavior. तो बच्चे एडोलेसेंट एडल्ट्स जो हैं ये डिफरेंट वे में फॉरगिवनेस को एक्सप्रेस करते हैं, फॉरगिविंग होते हैं. चिल्ड्रन अपनी एज के अकॉर्डिंगली होंगे और चिल्ड्रंस की रीजनिंग एबिलिटी इतनी होती भी नहीं है, वो उस तरह सिचुएशन को रीजन आउट नहीं करते जैसे एडल्ट करते हैं. और इसी तरह एडोलेसेंट एडल्ट से रीजनिंग एबिलिटी उनकी जो है वो थोड़ी कम होगी. ऐसा नहीं कि नहीं होगी, बट दे कैन रीजन आउट और जज ए सिचुएशन अकॉर्डिंग टू देयर एज. तो उनकी जो एज है उसकी अकॉर्डिंगली करेंगे ना. एक 22 इयर्स का है तो 22 years year old person and another is 7-year-old child. So 7-year-old child cannot think as a 22-year-old person can think. तो वो होती है डिफरेंस आ जाता है. In our research, older adults reported significantly higher likelihoods of forgiving in a variety of transgression scenarios than did the adolescent and adults. So research also proved that the older research participants appear to be more forgiving toward variety of situation offenses as compared to adolescent and adults. तो older जो थे वो they were more forgiving. तो ये general observation भी हमारी है कि जो older होते हैं they forgive more if we compare them with adolescent and adults. Adolescent adult also forgive someone. ऐसा नहीं कि इनका forgiving tendency कम होती है, लेकिन comparison जब किया गया तो older में है. तो हमारी daily observation भी है कि जो older होता है ना वो चीजों को थोड़ा वो कर लेते हैं, बहुत उस situation को या conflict को resolve करने की उससे इंटेंशन से जो है वो बहुत दफा फॉरगिव करते हैं और विथड्रॉ करते हैं. Older adults also scored considerably higher than did young adults on measure of the disposition to forgive. So when researchers examined the disposition to forgive using a forgiveness questionnaire, then they found older people scoring more and reporting more forgiveness, a higher level of forgiveness as compared to young adults. तो researchers जो है वो उनमें बताती है कि इनमें forgiving tendency जो older में ज्यादा होती है. Older participants reported more forgiveness in terms of self, others and situation as compared to adolescents and adults. So in another research, it was also observed that the older participants were more forgiving towards self, other and situation when they were compared with adolescent and adults. तो ये होता है कि sometimes you need to forgive your own self, sometimes you need to forgive others and sometimes you have to forgive the situation. तो ये इन तीन डायमेंशंस में जो forgiveness को स्टडी किया, कंपैरिजन किया गया, older जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ज्यादा forgiving. It is reasonable to ask whether these age-related trends in forgiveness are linked to age-related trends in general cognitive or moral development. Reasoning about forgiveness develop along the same trajectory of moral reasoning. So, age-related trend should be investigated in the context of forgiveness because forgiveness is all further related with the cognitive and moral development and abilities. The person reason out the different things in a situation in the different way. So a person, a child cognitive and moral development abilities or reasoning abilities will be different from the adolescent and the adult. So with the passage of time, a person cognitively and morally develop during the different phases of life span development. तो ये जो हमारी जो reasoning भी होती है वो भी develop होती है उसी same way में जैसे moral reasoning होती है. People start thinking and rationalizing different situation and they start understanding the attitude of another person and use a child cognitive ability will be different and child will perceive and consider the thing in the different way.
and a child will gradually become able to understand the complicated situation. तो वो बच्चों की तो फिर ऐसा ऐसा होगी ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे होती जाएगी, वो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेगा. बिगनिंग में तो बच्चा नहीं होता कि उस लेवल पर जाकर सोच सके जिससे एडल्ट सोचते हैं. सिमिलरली चाइल्ड विल डेवलप द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो उसकी जो मोरल डेवलपमेंट है, वो जितना रीजन आउट करेगा, वो एक वक्त के साथ ही होगी. तो एज रिलेटेड ट्रेंड्स जो होते हैं ना, दे काउंट अ लॉट इन डिटरमिनिंग a specific attitude toward a situation or a person or a specific thing. तो हमारे जितने एटीट्यूड हमें डिफरेंट डोमेन में हम जिस तरह परफॉर्म करते हैं, हमारे एटीट्यूड है, उसमें एज रिलेटेड ट्रेंड्स जो हैं बहुत काउंट करते हैं, मैटर करते हैं. People at earlier stages of moral reasoning about forgiveness, the stages of revengeful forgiveness and restitution of forgiveness, reason that forgiveness is only appropriate after the victim has obtained revenge or the transgression has made restitution. So people at early stage of moral reasoning means कि जो early जो level होता है ना moral reasoning का, at this stage people consider the forgiveness as the act or a reaction toward the transgression. तो जो transgression हुआ है, जो चीज हुई है, उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्शन में, क्योंकि वो ये कहते हैं कि a person or victim give harm to the offender because offender first gave harm to him. तो उसने उसको इंजरी दी है, इसलिए victim ने उसको की. तो victim is basically has taken the revenge from the offender or the transgressor. तो वो तो उसने मामले को बराबर किया. तो ये रीजन आउट करते चले जाते जो moral reasoning होती है. तो moral reasoning जो डेवलप होती है, उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं. तो डिफरेंट स्टेजेस people will respond differently toward transgression and the transgressor. तो वहाँ पे उनके responses जो हैं, moral उनकी कितनी development हुई है, that moral development will determine whether a person is willing to forgive the offender or not. People at the intermediate stages, expectational forgiveness and lawful expectational forgiveness, reason that a forgiveness is appropriate because social, moral or religious pressure compel them to forgive. So during the intermediate stage of moral development, people forgive others, saying that and thinking that the forgiveness was required because of the social, moral and religious pressure they felt during that incident or throughout the situation. So they were compelled to forgive the another person because society was demanding forgiveness from me, and my moral sense was also compelled me to do or to forgive the offender. And in my religion I have been instructed to forgive who hurt me. तो ये हम रीजन देते हैं. जैसे मैं रीजन आउट कर रही हूँ ना कि मैं इसलिए माफ कर रही हूँ, सोसाइटी प्रेशर कर दे रही है, मेरे अंदर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, इट्स बेटर टू फॉरगिव अदर देन टेकिंग रिवेंज फॉर समवन. तो ये मेरी एक वो है ना मोरल डेवलपमेंट के, छोड़ो ना, बदला लेना अच्छी बात नहीं होती, रिवेंज इज नॉट गुड, तो वो अच्छी बात नहीं है. इसी तरह रिलीजन है, तो रिलीजन ऑल्सो डायरेक्टेड अस टू फॉरगिव द ऑफेंडर इन डिफरेंट सिचुएशन. तो वो हमारे पास हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एक लॉ भी होता है और एक्सपेक्ट भी किया जाता है. That's why we forgive others, but it happens at the intermediate stage of moral development. People at the high stages, forgiveness as social harmony and forgiveness as love, reason that forgiveness is appropriate because it promotes a harmonious society and an expression of unconditional love. So at the high stage of moral development, people will forgive each other in order to maintain the social harmony and in order to sustain their interpersonal relationship, because without forgiving you cannot get along with others for in a long run. तो आपके लिए बहुत पॉसिबल, मतलब है ही नहीं आपके लिए पॉसिबल कि आप एक रिलेशनशिप को लेकर चल सकें if you are not forgiving toward each other. तो in order to promote harmonious society, in order to sustain the relationship, we usually have to express unconditional love that is not conditioned with anything. Unconditional, whether someone is good with you or give you benefit or not, you love that person. कि वो एक कंडीशनल नहीं है कि कोई अच्छा है नहीं है, लेकिन आपके अंदर उसके लिए इमोशंस जो है वो सेम रहता है, फीलिंग सेम रहती है. तो विदाउट फॉरगिवनेस वी कैन नॉट मेक आवर सोसाइटी पीसफुल एंड वी कैन नॉट क्रिएट हार्मोनियस सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल. तो ये लास्ट स्टेज में हाईएस्ट स्टेज होती है. जैसे अर्ली स्टेज पर तो पर्सन कहता है कि
जो है ना उसने विक्टिम ने किया तो रैशनलाइज करता है ना, विक्टिम ने उसको किया इसलिए लिया था क्योंकि उसने उसको तकलीफ दी। इंटरमीडिएट स्टेज पे वो कहता है कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, मोरल हमारी वैल्यूज जो हमें डिमांड करती है, हमारा रिलीजन डिमांड करता है, एंड वी हैव टू फॉलो आवर रिलीजियस वैल्यूज, आवर सोशल वैल्यूज, दैट्स व्हाई वी शुड फॉरगिव ईच अदर। बट एट द हाई स्टेज पीपल एसोसिएट द फॉरगिवनेस विद द गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड हार्मनी, सोशल हार्मनी, justice, peace and everything. Personality is another strongest factor that determine our forgiving behavior. Forgiving people differ less forgiving people on many personality attributes. So personality characteristics of forgiving people are different from the characteristics of the less forgiving people. Forgiving people report less negative effects such as anxiety, depression and hostility. So people who forgive others usually have positive effects and express positive kind of emotion in variety of situations. They do not easily get tense to face a problematic situation. Even they have control over the feelings. They do not feel sad if they encounter a problematic situation or face a failure or couldn't get a success on a specific task. And forgiving people do not easily get frustrated due to social issues or environmental issues. And as well as they do not harbor hostility and negative feelings toward others. That's why they not easily, but they are able to forgive the offenders in variety of situations. तो इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है ना कि बहुत ज्यादा एकदम बहुत परेशान नहीं रहते या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, सैड नहीं होते, डिप्रेशन इनमें उस तरह इनके इमोशंस नहीं होते, हॉस्टिलिटी इनके अंदर नहीं होती है। इसलिए इनके अंदर ये जो पॉजिटिव टेंडेंसी होती है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनके पर्सनालिटी की, वो जो होती है ना वो इनमें इस फॉरगिविंग बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है। Forgiving people are also less ruminative, less narcissistic, less exploitative and more empathetic than less forgiving counterparts. So forgiving people do not ruminate a specific thing. Rumination, you keep thinking about a specific situation and a person. So they do not ruminate and they are not narcissistic. Because the narcissistic people usually love their own self, they like their own self and they think of them superior than others. उनको लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम अच्छे हैं, हमारे अंदर क्वालिटीज है. They do not give importance to the feelings of other. They give importance to feeling on our own feelings and emotions. तो इसलिए जो narcissistic होते हैं उनमें इस टेंडेंसी की वजह से वो इतनी आसानी से माफ नहीं करते हैं. लेकिन जो forgiving people होते हैं उनके अंदर narcissistic जो टेंडेंसी होती है, अगर होती भी कम होती है, मतलब वो उनकी तरह नहीं होते. अगर इनके अंदर ये टेंडेंसी कम है narcissistic, then they will be willing to forgive others because then they will be they give value to the feeling of others. दूसरों को अहमियत देते हैं, दूसरों को वो करते हैं. And similarly, forgiving people do not exploit another one and they express more empathetic feeling and emotions toward a person who is facing a problem. तो वो empathetic जो इनके responses होते हैं, इनकी टेंडेंसी इनके अंदर होती है, इनके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर है एक टेंडेंसी है कि दे कैन एक्सप्रेस एम्पैथी, दे कैन हैव एम्पैथेटिक फीलिंग फॉर समवन, देन दे विल फॉरगिव मोर. तो जो लेस फॉरगिविंग होते हैं उनमें वो रूमिनेट करते सोचते रहते हैं बात बार बार. नार्सिसिस्टिक लाइक टेंडेंसी हो सकती है कि वो अपने आप को अहमियत देते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव हो सकते हैं और उनके अंदर एम्पैथी भी कम होती है. इफ दे गिव बेनिफिट्स टू समवन इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ ओन सेल्फ. तो ये इस तरह की अगर डिफरेंसेस आप फॉरगिविंग एंड नॉन फॉरगिविंग में देखेंगे. Many personality traits can be reduced to a handful of higher order personality dimension. तो वो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं कि जो हायर ऑर्डर पर्सनालिटी डायमेंशन है बनती चली जाती, तो उनके साथ आप उनको जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, जैसे उसमें आती है ना कि जो ऑर्डर बना होता है ना हायर ऑर्डर 1 2 3 4 5, तो इस तरह कुछ पर्सनालिटी ट्रेट आती हैं. विद इन द बिग 5 पर्सनालिटी टेक्सोनॉमी द डिस्पोजिशन टू फॉरगिव appear to be related most strongly to agreeableness and neuroticism. तो अगर बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी, ये खेल क्वेश्चन है that measure the 5 major dimension of personality. So if you examine this 5 personality dimension in respect to the forgiveness, then you will find it that the tendency to forgive is associated with agreeableness. Agreeableness is a one dimension of the personality and neuroticism another type of a personality.
तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो फॉरगिवनेस के साथ रिलेटेड है। एग्रीएबलनेस के साथ ये पॉजिटिव वे में होगी और न्यूरोटिसिज्म के साथ नेगेटिव में। क्योंकि न्यूरोटिसिज्म में पर्सन नेगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा देखता है, हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट। जब एक पर्सन हर बात का नेगेटिव वो पहलू निकालेगा, उस पर फोकस करेगा, तो देन ही विल बी मोर नेगेटिव। तो ही विल फील नेगेटिव, थिंक नेगेटिव, और उसके जो वो इमोशन, नेगेटिव थिंकिंग है, इमोशन और फीलिंग्स हैं, वो जो है वो डिटरमिन करेंगी कि पर्सन के एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स। Adjectives such as revengeful and forgiving tend to be excellent markers for the agreeableness dimension of the Big Five taxonomy. Another research confirmed the link between agreeableness and forgiveness. So, adjective vengeful जो इंतकाम लेने वाला होता है, और forgiving the person who is willing to forgive others. So, these adjectives are associated with the two major dimensions of the personality, agreeableness and neuroticism. So, agreeableness is associated with the vengeful and forgiving because agreeable person show kindness and warmness toward others. So, that's why they are more willing to forgive the offender and forgive the situation as well. तो इनके अंदर जब एक किसी पर्सन के अंदर काइंडनेस होगी, वार्मनेस होगी, दूसरों की बेटरमेंट को सोचेगा, दूसरों के साथ एसोसिएट करेगा, then he or she will be more forgiving toward others. That's why this type of personality does not like to take revenge from the offender. क्योंकि इनके लिए किस चीज को प्रेफर करते हैं, ये काइंडनेस को, केयर को, दूसरे को रिलेट करने को प्रेफरेंस देते हैं. That's why other researchers also have confirmed the strong association between agreeableness and forgiveness. तो इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन है. Agreeableness increase कर रही है, then forgiving will also be increased. Or if agreeableness is getting declined, then the person will not be ready to forgive others. Researchers shown that forgiveness is inversely associated with neuroticism. Researchers also confirmed the inverse relationship of forgiveness with neuroticism because neuroticism tendency is related to the negative thinking and feeling. A person with this personality trait will more focus on the negative aspect of a situation or a person and whatever happened to him or her. That's why such type of personality does not easily forgive someone. Although forgiving is not easy in some situation, it is very difficult for a victim to forgive the person or the offender or the transgressor. But at least people try to forgive the offender or the transgressor. But neuroticism does not let person to even think about the forgiveness. Personality traits, agreeableness, extrovert, and conscientiousness predicted forgiveness of others. So these three personality traits are strongly related with the forgiving tendency and predicted the forgiving behavior. Extroverts are also outgoing people and they feel energetic by interacting with the external world. That's why they seem to be more forgiving. So that's why these personality traits have a strong association with the forgiveness. Neuroticism and agreeableness is stronger predictor of forgiveness of self, other and situations. So researchers also showed that the people with neuroticism personality trait and agreeableness have a strong association with the forgiveness of self, others and situation. So neurotic people will hardly forgive on self, other and situation. Agreeableness also person will be more likely to forgive self, other and situations. So thus forgiving person appear to be someone who is relatively high in agreeableness and relatively low in neuroticism, negative emotionality. So person with forgiving tendency will score high on the scale of agreeableness but low on the neuroticism, negative emotionality. तो इनके अगर स्कोर्स को भी आप चेक करेंगे तो जो फॉरगिविंग टेंडेंसी के साथ होंगे उनमें आप पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो उस स्केल पर एग्रीएबलनेस पर वो हाई जाएगा और न्यूरोटिसिज्म पर वो नेगेटिव होगा. Social factor influencing forgiveness. Forgiveness is influenced also by the characteristics of transgression and the context in which they occur. Victim also pay attention on different aspects of the transgression and the situation, a context in which the transgression occurred. He or she also consider different reasons and different parts of the transgression. कि वो होती है कि क्या है, किस किस्म की नौयत है, नेचर. बेसिकली विक्टिम ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस. कि एक वाकया हुआ है, एक ऑफेंस हुआ है, किसी ने हर्ट किया, वो किस नेचर का है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है. फिर वो डिसाइड करता है कि उसको फॉरगिव करना है कि नहीं करना है. जनरली पीपल हैव मोर डिफिकल्टी फॉरगिविंग ऑफेंसेस दैट सीम मोर इंटेंशनल एंड सीवियर एंड दैट हैव मोर नेगेटिव consequences. So people hardly forgive those who deliberately hurt them and intentionally hurt them and
and severely hurt them as well. कि ऐसे लोग के जो deliberately करते हैं कि suppose if a person deliberately hurt you a lot and in front of others and you feel insulted, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस पर्सन को फॉरगिव करना. कि एक चीज होती है अनकॉन्शियसली, सम थिंग्स हैपन अनकॉन्शियसली, नॉट ऑल द टाइम वी बिहेव कॉन्शियसली, समटाइम्स सम एक्शंस आर द प्रोडक्ट ऑफ द अनकॉन्शियस, के एकदम अनकॉन्शियसली हो जाते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड लेटर ऑन रियलाइज दैट कि ओह अच्छा ऐसा हो गया, मुझे तो ऐसा नहीं करना था, अच्छा मुझे समझ नहीं आई कैसे हो गया. तो वी यूजुअली फॉरगिव सच काइंड ऑफ एक्ट्स अगर हमें पता हो. लेकिन अगर इंटेंशनली पता डेलिबरेटली जानबूझ के एक पर्सन कर रहा है तो यू विल नॉट बी विलिंग टू फॉरगिव दैट पर्सन. और फिर सीवियरिटी, you can forgive minor offenses, but if a person has severely hurt you and you felt it a lot and then you remained disturbed for 1 month, 2 months, 3 months and some people become depressed or remain anxious for years. मतलब डिपेंड करता है ना कि कितना तकलीफ दे कोई वाकया हो गया, कोई बात हो गई है और आप पूरा साल आपको लग गया उससे निकलने में, तो फिर इतना इजी नहीं होता. तो sometimes a victim face dire consequences of an offense, कि उसके जो इतने वो dire consequences होते हैं, उसके नेगेटिव होते हैं, कि जिस तरह का वो मसला होता है कि उसकी बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो वो consequences जो है वो देखेगा, तो victim will forgive other in the light of the severity, intensity of the offense and the negative consequences the victim face as a result of the offense or transgression. The extent to which an offender apologizes and seeks forgiveness for a transgression also influences victim likelihood of forgiveness. And especially when a person apologizes or admit the mistake for the offense he or she has committed, then you will be willing to forgive that person. देखते हैं ना जो कोई माफी मांग लेता है या अपनी गलती को एडमिट करता है, तो आप कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो, बस तो माफी मांग लिया, बस छोड़ दो, उसको माफ कर दो. क्या एक बंदे ने माफी जो मांग ली, उसने अपनी गलती को एडमिट कर लिया, तो चलो जाने दो, जो किया सो उसने किया. Then victim will be more likely to forgive that person who at least admit his or her mistake. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना एडमिट करते हैं और ना माफी मांगते हैं. You will never like to forgive those people who even do not admit their mistake. तो जो एक गलती को भी नहीं मानते हैं, जो इतने stubborn हैं और वो गलत करके वो समझते हैं कि ये हमारा right है, तो ऐसे लोगों को फिर apologize मतलब forgive नहीं किया जाता. Perhaps apologies and expression of remorse allow the victim to distinguish the personhood of the transgression from his or her negative behavior, thereby restoring a more favorable impression and reducing negative interpersonal motivation. तो apologies जो होती है ना, remorse होता है, lament होता है, तो हम वो अपने एक्शन जो हमने लिए होते हैं वो पछता रहे होते हैं, माफी मांग रहे होते हैं. इससे क्या होता है, जो विक्टिम होता है ना, तो वो जातियात से बाहर आ जाता है. वो ट्रांसग्रेसर को उसकी जात से हटके उसकी नेगेटिव बिहेवियर को उससे अलहदा करता है, उसके ना सेपरेट करके देखता है कि बस उसको एक पर्सन के तौर पे लेता है और कहता है कि अच्छा ये इसका एक नेगेटिव बिहेवियर था, और फिर वो उसका जो है वो उस रिलेशनशिप को रेस्टोर करता है. इंटरपर्सनल उसके अंदर मोटिवेशन जो है वो डेवलप होती है, नेगेटिव कम होती है और फेवरेबल इंप्रेशन जो है वो ये डेवलप होता है कि जी रिलेशनशिप को इट्स बेटर टू रेस्टोर द रिलेशनशिप. एंड इफ ओके दिस पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट नाउ ही इज लमेंटिंग ओवर दैट, ही और शी इज एक्सप्रेसिंग द रिमोर्स रिलेटेड टू द ऑफेंस, तो अब उसने माफी मांग लिया, एडमिट कर लिया, तो ओके लेट इट गो, इसको जाने दे, कोई बात नहीं, इसका एक नेगेटिव एटीट्यूड था. ऑल्दो पर्सन इज नॉट बैड, एटलीस्ट ही हैज एडमिटेड हिज और हर मिस्टेक. तो फिर ये होता है कि वो एक फेवरेबल इंप्रेशन जो है रेस्टोर हो जाता है, बहाल हो जाता है, और नेगेटिव इंटरपर्सनल मोटिवेशन जो होती है पर्सन की कम होती है. In this way, apologies may represent an effective form of reality negotiation. That is one kind of a negotiation held between transgressor and the victim. तो दोनों के दरमियान एक तरीके से नेगोशिएशन हो गई, बातचीत होती है. वो कहते हैं बाजू का डिस्कस कर लेते हैं कि देखो ठीक है मैंने किया, मुझे भी एहसास है मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, आप मुझे फटकूंगा, मैं ख्याल रखूंगी आइंदा इस बात का. तरह की चीजें होती है ना, तो वो एक नेगोशिएशन के फॉर्म में होती है, रियलिस्टिक नेगोशिएशन है. Then this negotiation provide opportunity to both transgressor and the victim to think about their behavior and reconsider their relationships. तो इससे फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर भी कर सकते हैं.
Interpersonal coherence of forgiveness. Forgiveness may be influenced also by the characteristics of the interpersonal relationship in which an offense take place. So victim also consider or pay attention to the characteristics of the interpersonal relationship. He considered different aspects of the interpersonal relationship, and then he become ready or willing to forgive the offender in response to the offense or the transgression he or she has committed. तो उसके different interpersonal relationship की nature क्या है, किस तरह का है. So these characteristics also contribute in forgiving behavior. Researchers have found that people are more willing to forgive in relationship in which they feel satisfied, close and committed. So if you are having a satisfactory relationship with the significant one, then you will be more likely to forgive the offender. The people who are very close to us and who are having or fulfilling commitment he or she has made with you, तो then you will be willing to forgive that person. तो हमारे जो करीब होते हैं, जिनसे हम satisfied होते हैं, कि जैसे आप एक अच्छा रिलेशन है आपका, लेकिन ऐसा हुआ कि 2 या 3 मौकों पर ऐसा हो गया कि पर्सन ने आपको बड़ा हर्ट किया, तो फिर आप उसको माफ करते हैं. किसी तरह हमारे क्लोज होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, या कजन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जैसे आपके बहुत से चचा हैं, मामू, खाला, पुप्पी हैं, तो आपके क्लोज रिलेशंस हैं. और फिर जो कमिटेड लोग होते हैं, जो कमिटमेंट को पूरा करते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन ये होता है कि कभी उनसे कोई गलती हो जाती है या कोई सिचुएशन ऐसी होती है, तो फिर जो है विक्टिम जो होता है वो फॉरगिव कर देता है. और ये आप जनरल उसमें देख लें कि आप कुछ ऐसे होते हैं रिलेशन जिनको आप फॉरगिव कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं करते. रिलेशनशिप closeness facilitate forgiveness, but also that forgiveness facilitate the reestablishment of closeness following transgression. So closeness also count a lot when a victim is expected to forgive the offender, and both closeness and forgiveness facilitate each other. Closeness will facilitate the forgiveness, and once you forgive the close relation, then you will be able to restore the relationship with that person, or you can reestablish the relationship with the person even you have been hurt at the hand of that close relation. तो जितना भी उसने आपको तकलीफ पहुंचाई होगी, तो आप उसके साथ उसको रिलेशन को रेस्टोर करेंगे, उसको रीस्टैब्लिश करेंगे. The proposition that forgiveness is related to relationship factors such as satisfaction, commitment and closeness raises the question of whether the dynamic of forgiveness could vary for different type of relationships. So these factors, closeness, commitment and satisfaction, although play a significant role in determining our forgiving behavior, but it raises more questions that should be answered at the dynamics of forgiveness can be varied when in the context of the different relationships. कि different आपके relationships से forgiveness भी change हो जाएगी, कि आपके parents के साथ बच्चों का relation की बात हो रही है, husband wife का relationship है, बहन भाइयों का है, cousins का है, friends का है, तो relationship क्या है, तो forgiveness के dynamics भी जो है वो vary कर जाते हैं relationship के में change के साथ. It is not expected from people to forgive perfect strangers in the same way they forgive their most intimate relationship partners. So it is obvious that we usually forgive to people who are very close to us, who are significant for others, and we hardly forgive the strangers and the person who are unknown to us. कि अगर एक stranger है, unknown है, या दूर का कोई relation है, अगर उसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, तो आप उसको इतनी जल्दी आप उससे relation नहीं बनाएंगे. लेकिन अगर कोई आप close आपका family member है, ठीक है, तो आप जो है वो उसको forgive जल्दी कर देंगे. Forgiveness, health and well-being. Researchers revealed that forgiveness is significantly related with well-being in married women in joint family. Here we discuss the findings of different researches conducted in different countries and societies. And this research was carried out in Pakistan, and it revealed that strong association of forgiveness with well-being, when specifically forgiveness was examined in married women who were living in joint family. So the joint family में जो मैरिड वुमेन थी, उनमें फॉरगिवनेस जो थी वो जितनी ज्यादा थी, तो उनकी वेलबींग भी उतनी ही अच्छी थी. रिवेंज मोटिवेशन इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड विद एग्रेशन, फिजिकल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन, एंगर एंड हॉस्टिलिटी अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. एंड दिस रिसर्च वाज कंडक्टेड टू एग्जामिन द रिलेशन ऑफ रिवेंज मोटिवेशन with aggression in university students, and researchers found out the association of revenge with different type of aggression, different form of
aggression among university students, such as aggression, physical aggression, verbal aggression, anger and hostility. तो रिवेंज मोटिवेशन का एसोसिएशन है कि आपके अंदर जितनी टेंडेंसी रिवेंज की होगी, आपके अंदर ये नेगेटिव जो है वो फीलिंग्स, इमोशंस जनरेट होंगे. So person will be more physically aggressive, verbally aggressive, angry and harbor hostile feelings and emotions toward others. और इसी तरह जिनमें एग्रेशन ज्यादा होता है, they are more likely to take the revenge from the offender. Self-forgiveness significantly predicts behavior control among university students. That study was also carried out in the sample of university student, and university student who were self-forgiving or forgiving towards self were more likely to have control over their behavior. इसी तरह दूसरी एक और रिसर्च है, forgiveness is positively associated with multiple indicators of subsequent psychosocial and mental health. That international paper discussed the relation of forgiveness with psychosocial and mental health. तो जितनी ज्यादा forgiveness होती है उतने ही multiple psychosocial जो है वो health results मिलते हैं, mental health जो है वो improve होती है. Forgiveness is positively and strongly correlated with mental health. The presence of forgiveness in depressed patient life was found to attain mental health. तो ये भी एक और स्टडी थी और इसमें भी पॉजिटिव एसोसिएशन देखी गई फॉरगिवनेस की मेंटल हेल्थ के साथ कि अगर डिप्रेस पेशेंट है, पेशेंट्स पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन जो है वो उनमें ये स्टडी की गई थी. तो दीज पेशेंट व्हेन फॉरगिव अदर पीपल स्कोर मोर ऑन द मेंटल हेल्थ के जो उनके मेंटल हेल्थ का एसोसिएशन देखी गई उनकी फॉरगिवनेस के साथ. तो जब डिप्रेस पेशेंट है उनमें फॉरगिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है, प्रेजेंट होती है, तो उनमें की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है. Dimension of forgiveness are positively related to perceived physical health. Self-forgiveness uniquely predicted a significant amount of variance in perceived physical health. So, different dimensions of forgiveness were examined in relation to physical health. Then researchers found out that the self-forgiveness was specifically counted for the variance in dependent variable that was physical health. तो physical health में self-forgiveness का बहुत strong role है कि जितने आप अपने आप को माफ करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ उतनी ही अच्छी होती है. Forgiveness was associated with health behavior of physical health outcomes. So forgiveness also has a strong connection with the healthy behavior and especially physical health. Reduction in hostility, reduced coronary problem, behavior modification intervention program showed a greater reduction in hostile behavior and heart problem than those who received standard care only. So, in our research, it was found out that the people who reduced their hostile behavior and hostile feeling toward others, they became able to have control over their heart-related issues. उनके जो heart problems हैं, a significant reduction in heart problem was observed due to the forgiving behavior intervention. तो जितना उनको लर्न करवाया गया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की गई उनकी, तो उनमें जो थी वो हॉस्टिलिटी को कम किया गया, तो उनके हार्ट प्रॉब्लम पर भी बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आया. So conclusion of the overall discussion is that forgiveness is an important corrective to the proclivities toward avoidance and revenge, people's typical negative responses to interpersonal transgression which seem to be etched deeply into the human template. So it is basically part of human nature that he or she may develop and harbor negative feelings and emotions toward interpersonal transgression and the offense transgression conducted at the hand of a significant one, stranger or people, unknown people. So such kind of negative emotions should need to be replaced if we want to lead a happy life and satisfactory life. So forgiveness make correction in the choices toward avoidance and revenge. So it's up to us. A person has to decide whether he should take revenge from the offender or he or she needs to avoid the offender or forgive him or her. तो ये choices हैं. तो forgiveness उन choices में कि हमने क्या चीज regularity में करनी है, किस तरह करनी है, तो ये forgiveness correct करती है, उनमें choice को correct करने में मदद करती है. And with the help of this forgiveness, we can convert our negative responses and emotions into positive ones. The world great religious tradition have commended forgiveness as so. World religious tradition also consider forgiveness as a response with redemptive consequences for transgression and their victims. So it is a way of relieving and liberating oneself from the consequences we usually face due to the transgression. तो वो जो victim
को भी इससे एक निजात मिल जाती है और ट्रांसग्रेसर जो होता है ना उनको भी इससे जो रिस्पॉन्स होता है इससे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है ना तो उससे उसको लिबर्टी मिल जाती है. A human virtue worth cultivating, so it should be considered as a virtue. Forgiveness is the virtue that should be cultivated. तो ये क्या करता है? This virtue further cultivate positive emotion and feeling in ourselves. तो हमारे अंदर ये पॉजिटिव चीजों को कल्टिवेट करता है, हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, हमारी इमोशंस और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर और ओवरऑल एटीट्यूड पे होता है. A form of social capital that helps social units such as marriage, family, community to operate more harmoniously. So forgiveness is essential to create harmony in the society, to make the world peaceful. It is also essential for a healthy marriage, functional families and the positive communities as well. Psychologists are beginning to grapple empirically with the diverse dimension of forgiveness. So there is no consensus over the definition of the forgiveness. Researchers have examined it in different form and in different dimensions. So researchers are basically psychological researchers are coping empirically with the different dimensions of forgiveness have been investigated so far. तो उनके सिर्फ ये नहीं कि forgiveness की nature को उसके different dimensions को empirically कैसे जो है वो देखना है, स्टडी करना है, प्रूव करना. Psychologists have developed method for assessing forgiveness in development, personality and social interaction. So psychologists have examined the nature and dimension of forgiveness in the context of developmental, personality and social interaction. So how forgiveness can relate with our developmental phase and personality characteristics and social relationships and how it is beneficial for us in different social settings. They have begun to explore the potential link of forgiveness to health and well-being. So they have worked a lot and further working to prove the potential as a link of forgiveness with our physical health and well-being and psychological health as well. Finally, they have the promising efficacy of clinical and psychoeducation intervention to promote forgiveness. So, psychologists are also working upon efficacy of working to examine the effectiveness of clinical psychoeducational intervention which help us in promoting forgiving behavior. So, the forgiveness therapy also has been invented and being offered to promote and boost the forgiving behavior. Now students, in this class activity, you have to generate the intervention strategies to boost forgiving attitude towards self, other and situation as well. So you have to generate the ideas and strategies through which we can able to forgive ourself, others and different situations. Students, you are being given 15 minutes to complete that task.